सो फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिसंबर 24 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन का, एंड वो है क्वेश्चन नंबर 5B। क्वेश्चन नंबर 5B, राइट। क्या है ये क्वेश्चन? ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग रिलीवेंट लीगल प्रोविजंस। क्वेश्चन नंबर 1, Lakshmi, a resident Indian, has undisclosed foreign deposit of rupees 30 lakhs. So how much is the amount of tax payable under Black Money Act 2015? And second question is, Narayan Limited received rupees 10 lakhs as subsidy to meet 20% of the cost of machinery, which was meant to reduce its air pollution in the factory. So how would the subsidy be dealt with as per ICDS VII? Third question is, on 10th December 2023, Ramesh, age 82, sold a vacant land for rupees 40 lakhs and the resultant long term capital gain computed हुआ है rupees 12 lakh का 12 lakh. He has no other income chargeable to income tax. So how much Ramesh must have paid as advance tax installment for the financial year 23-24 to avoid interest levy if any? And और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, Hari, aged 67, a pensioner retired from SBI, has monthly pension of rupees 82,000 throughout the previous year 23-24, and his only other income was savings bank account interest of rupees 32,000. He filed his ITR on 29th October 2024 and no tax was deducted on pension paid to him. So how much is payable by way of interest by Hari for non-payment of advance tax and delay in filing ITR? Right. तो ये सब क्वेश्चन है, एंड ये जो क्वेश्चन नंबर 5B है, क्वेश्चन नंबर 5B का वेटेज है 7 मार्क्स, राइट। तो ऐसे 4 क्वेश्चन है, तो ईच क्वेश्चन कैरीज 1.5, 1.5, 1.5, राइट। तो ऐसे ही करके मार्क दिया गया है। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मी, a resident Indian, has undisclosed foreign deposit of rupees 30 lakhs. How much is the amount of tax payable under Black Money Act 2015? Right. So see, as you know that tax payable on undisclosed foreign deposit under Black Money Act 2015 के according, the tax rate under this act is 30% on such undisclosed foreign assets, right? So अब यहाँ पर लक्ष्मी का जो फॉरेन डिपॉजिट है वो है 30 लाख, एंड 30 लाख का जो टैक्स हो रहा है वो हो रहा है 30 लाख इंटू 30%, ये आ रहा है 9 लाख, राइट। 30% ऑफ 30 लाख 9 लाख जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा लक्ष्मी को, राइट। सो अब हमको प्रेजेंट कैसे करना है? फास्ट लिखना है टैक्स पेबल ऑन undisclosed foreign deposit under Black Money Act 2015. Black Money Act 2015, right? So Black Money undisclosed foreign income and assets Act 2015 applies to undisclosed foreign assets, and the tax rate under this act, is 30% on such undisclosed foreign assets. राइट। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन, Narayan Limited received 10 lakh as subsidy to meet 20% of the cost of machinery, which was meant to reduce air pollution in the factory. So how would the subsidy be dealt with as per ICDS? ICDS means Income Computation and Disclosure Standard. ICDS VII. तो ये है क्वेश्चन। तो हमको पता है जो ICDS VII है ये है गवर्नमेंट ग्रांट्स। ICDS
VII जो है वो है गवर्नमेंट ग्रांट, राइट, ये है गवर्नमेंट ग्रांट्स. सो ICDS VII explain that if a subsidy or grant is received for a depreciable asset, then it should reduce the actual cost or written down value of the asset. Here, since Narayan Limited received rupees 10 lakh as a subsidy for a pollution control machine, it should be reduced from the actual cost or written down value of the asset before calculating depreciation. Simply इतना ही हमको लिखना है. ICDS VII, ये जो ICDS VII जो गवर्नमेंट ग्रांट है, इट स्टेट्स दैट if a subsidy or grant is received for a depreciable asset, then it should reduce the actual cost or a written down value, which is called WDV, written down value of the asset. Right. Since Narayan Limited received rupees 10 lakhs as a subsidy for a pollution control machine, it should be reduced from the actual cost or WDV of the asset before calculating depreciation. Right. So ICDS VII government grant states that if a subsidy or grant is received for a depreciable asset, then it should reduce the actual cost or WDV of the asset. Here, since Narayan Limited received rupees 10 lakh as a subsidy for a pollution control machine, then it should be deducted from the actual cost or WDV of the asset before calculating depreciation. बस इतना ही हमको लिखना है. Then third question क्या है? On 10th December 23, Ramesh age 82 sold a vacant land for 40 lakhs and the resultant long-term capital gain हुआ है 12 lakh का. He has no other income chargeable to income tax. So how much Ramesh must have paid as advance tax installment for the financial year 23-24 to avoid interest levy if any? तो ये है क्वेश्चन. तो अब हमको इस क्वेश्चन का भी सॉल्व करना है. ये थोड़ा सा लेंदी होगा. क्यों लेंदी होगा? क्योंकि जो एडवांस टैक्स है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा. क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? क्योंकि हियर रमेश का एज है 82, राइट. सो एडवांस टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीनियर सिटीजन्स व्हिच इज एज्ड 60 और अबव, एंड इफ दे हैव नो इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. ये सेक्शन 207 के अंदर अच्छे से लिखा गया है एज पर इनकम टैक्स एक्ट. एज पर इनकम टैक्स एक्ट 207 के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. अगर एडवांस टैक्स कोई सीनियर सिटीजन है जिसका एज 60 से ज़्यादा है तो वहाँ पर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर इफ़ दे हैव नो इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एज पर सेक्शन 207 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. हियर सिंस Ramesh age is 82 and has only long term
capital gains of business or profession as per section 2, long-term capital gain of rupees 12 lakh and no business income. So he is not required to pay advance tax and he can pay the entire tax as self assessment tax. ये self assessment tax pay कर सकते हैं, assessment tax pay कर सकते हैं instead of advance tax, right? So here we can write that advance tax requirements for Ramesh is 82 on long-term capital gain. Advance tax requirement for Ramesh is 82 on long-term capital gain, right? तो लिखना है advance tax is not required for senior citizens who is aged 60 or above. Condition is if they have no income from profits and gains of business or profession as per section 207 of the Income Tax Act. Advance tax is not required for senior citizens who is aged 60 or above if they have no income from profit and gains of business or profession as per section 207 of the IT Act. सेक्शन 207 के अंदर ऐसे लिखा गया है. और सेकेंड लाइन में लिखना है सिंस रमेश एज 82 and has only long-term capital gain of rupees कितना 12 lakh and no business income so he is not required to pay advance tax. Simple. He can pay the entire tax as self assessment tax before filing his income tax return. इनकम टैक्स रिटर्न, राइट. तो इतना ही हमको लिखना है. एडवांस टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीनियर सिटीजन्स एज 60 और अबव इफ दे हैव नो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी और प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एज पर सेक्शन 207 ऑफ द आईटी एक्ट. और हियर सिंस रमेश एज इज 82 and has only long-term capital gain of rupees 12 lakh and no business income, so he is not required to pay advance tax. Instead, he can pay the entire tax as self-assessment tax before filing his income tax return. बस simple, इतना ही हमको लिखना है. अब question number 4. Hari age 67, a pensioner retired from SBI, has monthly pension of rupees 82,000 throughout the previous year 23-24.
His only other income was savings bank account interest of rupees 32,000. He filed his ITR on 29th October 2024 and no tax was deducted on pension paid to him. So how much is payable by way of interest by Hari for non-payment of advance tax and delay in filing ITR? Right. तो ये है क्वेश्चन. See, interest payable by Hari for late ITR filing and non-payment of advance tax. ये है क्वेश्चन. So हमको पहले इनकम कैलकुलेशन करना है. तो पेंशन मिला है कितना? 82,000. फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट इनकम. इनकम कैलकुलेशन, राइट. तो पेंशन मिला है कितना? 82,000 इंटू 12. 82 इंटू 12 ये कितना हो रहा है? 9,84,000. 9,84,000, राइट. तो यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है आज यूजुअल वो माइनस हो जाएगा. कितना? 50,000, राइट. और ये कितना आएगा? 9,84,000 माइनस 50,000, तो ये आ जाएगा 9,34,000, राइट. एंड इसमें और भी कुछ एडिशनल इनकम है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जैसे कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट आया है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है. सेविंग इंटरेस्ट कितना आया है? 32,000. ये भी ऐड हो जाएगा 32,000, तो ये हो जाएगा 9,34,000 प्लस 32,000, 9,66,000. 9,66,000 ये आया इनकम आया है 9,66,000. नाउ लेट आइटर फाइलिंग हुआ है, तो वो लेट फाइलिंग आइटर का सेक्शन है 234A. लेट आइटर फाइलिंग इंटरेस्ट जो है वो है सेक्शन 234A के अंदर. लेट आइटर फाइलिंग इंटरेस्ट सेक्शन है 234A. एंड ड्यू डेट जो है हमको पता है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR है एज यूजुअल 31 जुलाई 2024, है कि नहीं. अब एक्चुअल फाइलिंग हुआ है, यहाँ पर एक्चुअल फाइलिंग जो हुआ है वो है 29 अक्टूबर 2024 को. तो एक्चुअल फाइलिंग हुआ है, कब? फाइलिंग ऑफ ITR है 29 अक्टूबर 2024. 29 अक्टूबर 2024 को एक्चुअल फाइलिंग हुआ है, राइट. तो अब 31 जुलाई से लेकर 29 अक्टूबर तक ये बीच में 3 मंथ्स का गैप हो रहा है. कितना गैप हो रहा है? 3 मंथ्स. तो यानी कि 3 मंथ्स लेट है, राइट. तो अगर 3 मंथ्स लेट है तो इंटरेस्ट लग जाएगा 1% के हिसाब से पर मंथ फॉर 3 मंथ्स, राइट. तो इंटरेस्ट लग जाएगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ्स तक इंटरेस्ट लग जाएगा, राइट. तो अब ये जो टैक्स ड्यू हो रहा है 9,66,000 के ऊपर, वो हो रहा है टैक्स ड्यू, और इसमें इंक्लूडिंग सेस जो 4% वाला सेस है, इंक्लूडिंग सेस को ऐड करने के बाद जो टैक्स हो रहा है 9,66,000 के ऊपर, वो हो रहा है लगभग 57,100 आफ्टर राउंडिंग ऑफ, राइट. और ये जो इंटरेस्ट है 1% फॉर 3 मंथ्स, ये कितना हो जाएगा? 57,100 इंटू 1% इंटू 3, 1713 हो रहा है इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स, राइट. इंटरेस्ट हो रहा है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% फॉर 3 मंथ्स, ये हो रहा है 1713. तो इतना इंटरेस्ट आरसीसी को पे करना पड़ेगा इंक्लूडिंग टैक्स ड्यू,
इंक्लूडिंग टैक्स ड्यू। तो टैक्स ड्यू 57,100 पे करना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% फॉर 3 मंथ्स 1713 हो रहा है, राइट। अगर आरसीसी ने ओल्ड रेजिम के हिसाब से अज्यूम करो कि अगर आरसीसी ने ओल्ड रेजिम के हिसाब से जा रहा है तो वहां पर थोड़ा सा टैक्स रेट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। अल्टरनेटिव केस means old regime, assumed old regime। अगर अल्टरनेटिव केस में अगर ओल्ड regime एसएससी ने सिलेक्ट किया है तो वहां पर क्या होगा, जो 32,000 है आफ्टर ₹32,000 ये मिल जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इनकम से अंडर सेक्शन 80TB में। 80TB में ये जो 32,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आया है सेविंग बैंक इंटरेस्ट, ये माइनस हो जाएगा टैक्सेबल इनकम से। तो नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगा कितना हो जाएगा, पहले था कितना इनकम 9,66,000, तो 9,34 स्टैंडर्ड 9,34, हाँ जो 9,34 हो रहा है वही 9,34 हो जाएगा। नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 9,34 लाख, राइट, 9,34,000। एंड इसके ऊपर जो टैक्स आएगा वो आएगा लगभग, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा इंक्लूडिंग सेस, वो हो जाएगा लगभग 1,670,000, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा 1,670,000, राइट। और इसमें इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ के हिसाब से। कितना मंथ का डिफॉल्ट था, 3 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स का डिफॉल्ट हो जाएगा ₹3020। सो हॉरी विल पे either 1713 or 3020 as interest depending on the tax regime he has selected, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5B का मैंने आंसर प्रेजेंट किया हूं। क्वेश्चन नंबर 5B का पहला क्वेश्चन का आंसर था ऑन डिस्क्लोज फॉरेन इनकम के ऊपर कितना रेट एप्लीकेबल होगा, एंड वो है 30%। ऑन डिस्क्लोज फॉरेन इनकम 30% एप्लीकेबल हो जाएगा, 30%, राइट। एंड ICDS भी आई गवर्नमेंट ग्रांट के हिसाब से इट स्टेट्स दैट इफ ए सब्सिडी और ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर ए डेप्रिसिएबल एसेट देन इट शुड रिड्यूस द एक्चुअल कॉस्ट और रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट। सिंस नारायण लिमिटेड रिसीव्ड ₹10 lakhs as a subsidy for pollution control machine, then it should be deducted from the actual cost or double DV of the asset before calculating depreciation. And advance tax requirement for Ramesh age 82 on long term capital gain के हिसाब से क्या होगा ना, advance tax is not required for senior citizen जिसका एज 60 और above है, and if they have no income from business or profession as per section 207 of the IT Act. एंड यहाँ पर सिंस रमेश का एज 82 है एंड हैज ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ ₹12 lakh एंड नो बिजनेस इनकम, सो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। Instead, he can pay the entire tax as self-assessment tax before filing his income tax return. एंड क्वेश्चन नंबर जो 4 है, लास्ट वाला क्वेश्चन, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन है। हमको पेंशनर के हिसाब से कितना पेंशन इनकम आया है वो कैलकुलेट करना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट है वो ऐड करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है, और लेट आईटीआर फाइलिंग किया है सेक्शन 234A के हिसाब से पेनल्टी लग जाएगा 1% वाला। तो एक्चुअल ड्यू डेट था 31 जुलाई, आरसीसी ने फाइल किया है 29 अक्टूबर 2024 को, तो इसमें 3 मंथ्स का गैप है। तो 3 मंथ्स गैप होने की वजह से 1% इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा फॉर 3 मंथ्स, राइट। सो टैक्स ड्यू हो रहा था 57,100 एंड इंटरेस्ट लग जाएगा वो टैक्स ड्यू के ऊपर 1% के हिसाब से फॉर 3 मंथ्स, दैट इज 1713। सो और अगर आरसीसी ने ओल्ड रेजिम के हिसाब से सिलेक्ट किया है तो 32,000 जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट है वो माइनस हो जाएगा इनकम से अंडर सेक्शन 80TB चैप्टर VIA के अंदर, एंड नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 9,34,000 जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी हो रहा है 1,670,000 और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 1% फॉर 3 मंथ्स, दैट इज ₹3,020, राइट। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 5B को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके प्रेजेंट किया, एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6A जो है वो कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन नंबर 6A का सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बट फॉर नाउ दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।